In the previous class, we were discussed about the law of refraction. First law, the incident ray, refracted ray and normal at the point of incidence lie in one plane. এইটা বর্তমান হলা incident ray, ধরো AB is the incident ray, normal BN and BC the refracted ray. All three line AB, BN and BC lie in one plane. It's because we are performing the experiment in a blackboard. So blackboard is a plane. So all three line will lie in same plane. ये है first law. Incident ray, normal एवं refracted ray एको समतल रे रहंती. ब्लैकबोर्डटा गोटे समतल तेणु तीनटा लाइन गोटे समतल रोचे. सेकेंड लॉ है द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इन्सिडेंस. एंगल ऑफ इन्सिडेंस है इन्सिडेंट रे एवं नॉर्मल भितर जो कोण सेटा कहती एंगल ऑफ इन्सिडेंस. नॉर्मल आउ रिफ्रैक्टेड रे भितर जो कोण सेटा को कहती एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. से कुछ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इन्सिडेंस तामाने साइन आई bears a constant ratio with the sine of the angle of refraction. तामाने sin I by sin I is a constant quantity. That constant is known as refractive index. जदि एटा हिथिबो मीडियम 1 एटा हिथिबो मीडियम 2 तबे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एटा काहारो ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1. इमती लिखा जाए sin I by sin R is equal to mu 2 1. जोटा को पशुथबो तार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैला सेकंड मीडियम टा तळे रहिबो आ जोटारु आसुथबो सेटा ऊपर रहिबो. तेनो एटा खाली प्योर म्यू न लिखि आमे लिखिबा जे म्यू 2 1. ये हैला फर्स्ट डेफिनेशन जे व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. द रेशियो ऑफ sin I to the sin R is a constant quantity. That constant is known as refractive index. कि in general आमे जोटा जिमती डाकी कहिचे the sine of the angle of incidence bears a constant ratio with the sine of the angle of refraction known as refractive index. एटा इमती किमती लिखा जाए mu 2 by mu 2 1. जदि एयर मीडियम रो लाइट रो वेलोसिटी v1 हेतिबो ग्लास मीडियम रो लाइट रो वेलोसिटी v2 हेतिबो. तेणु यार सेकेंड डेफिनेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रो सेकेंड डेफिनेशन हैला यला डेफिनेशन 2 सेटा हला डेफिनेशन 1 एटा डेफिनेशन 2. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of medium 2, the refractive index of medium 2 with respect to medium 1 the refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is defined as the ratio of velocity of light in medium 1 to the velocity of light in medium 2. The refractive index of medium 2 with respect to medium 1. Then mu refractive index of medium 2 with respect to 1 is defined as the ratio
velocity of light in medium 1 तुमर medium 1 थिला air तार velocity हला v1 सेकेंड हला v2 लाइट रो velocity जदि medium 2 रो v2 तबे mu21 is equal to v1 by v2 तेणु प्रथमटा हला mu21 is equal to sin I by sin R ये हला फर्स्ट सेकेंडटा जे एटा सेकेंड डेफिनेशन जे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 is defined the ratio of velocity of light in medium 1 to the velocity of light in medium 2. Definition 3. If first medium is vacuum, if the first medium is vacuum, then the velocity of light then the refractive index of medium 2 with respect to medium 1 may also be defined as the ratio of velocity of light in vacuum to the velocity of light in the medium. That is mu21. देखो if the first medium is vacuum प्रथम मीडियम टा जदि महाशून्य होइतिबो then the refractive index of medium 2 with respect to medium 1 mu21 may also be defined as the ratio of velocity of light in vacuum light velocity in vacuum hela c to the velocity of light in the medium. Light velocity जदि v2 थिबो where v2 is the velocity of light in the second medium. vacuum माने महाशून्य तेणु एटा को लिखिदेले mu20 vacuum है किसी नहीं महाशून्य तेणु फास्ट मीडियम 1 जगह में लिखिदेली शून्य इज इक्वल टू c by v2 कि सिंपली mu2 is equal to c by v2 mu2 is equal to c by v2
सिमिलरली जदि लाइट रो वेलोसिटी v1 हेइथिबो similarly we can write mu1 is equal to c by v1 এটা করতেলে ইকুয়েশন 3 এটা করতেলে ইকুয়েশন 4 if v1 हला velocity of light in second medium आउथरे कहूँ लक्ष्य कर से कहूँ यहीटा जदि गोटे ग्लास मीडियम हुए एटा इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एमर्जेंट रे से कहूँ एठी लाइट रो वेलोसिटी जदि v1 हेइथिबो एठी लाइट रो वेलोसिटी जदि v2 हेइथिबो तेबे आमे कहूचे एटा फर्स्ट मीडियम एटा सेकंड मीडियम हेइथिबो तेबे आमे कहूचे μ21 टा केते हेबो ना v1 by v2 एटा सेकंड डेफिनेशन आमे कहिसे से कहूचे एटा जदि वैक्यूम हेबो तेबे लाइट रो वेलोसिटी हेइजिबो c एटा हला v2 वैक्यूम माने महाशून्य तेणु एठी लिखदेले शून्य तेणु शून्य किसी नहीं तेणु इन जनरल आम लिखदेले μ2 इज इक्वल टू c by v2 जदि एटा आम v1 लिखा एठी लाइट रो वेलोसिटी c तेबे लिखिदे परिबा जे μ1 इज इक्वल टू c by v1 μ1 इज इक्वल टू c by v1 और इन जनरल we can write mu is equal to c by v if v is equal to velocity of light in the medium. Velocity of light in the second medium. It is like question 5. This refractive index is known as absolute refractive index. This refractive index is known as absolute refractive index. So, the absolute refractive index is defined as the ratio of velocity of light to the velocity of light in the medium. So the absolute refractive index is defined as the ratio of velocity of light in vacuum, velocity of light in vacuum to the velocity of light in the medium. तेणु फास्ट मु कहनी जे
refract index of medium 2 with respect to 1 is also defined as the ratio of sine of the angle of incident to the sine of the angle of refraction. ये फर्स्ट डेफिनेशन. सेकेंड डेफिनेशन आम कहले μ21 इज इक्वल टू v1 by v2. थर्ड डेफिनेशन कहले μ इज इक्वल टू c by v. बर्तमान फोर्थ डेफिनेशन. डेफिनेशन 4. फोर्थ डेफिनेशन आम कहले जे वी नो μ21 इज इक्वल टू v1 by v2. μ21 इज इक्वल टू v1 by v2. आम जानी द रिलेशन एमंग वेलोसिटी फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ एटा फर्स्ट ईयर पढ़ाई जे v इज इक्वल टू एफ लैम्बडा. v इज इक्वल टू एफ लैम्बडा. तेणु लिखिदेले एफ लैम्बडा 1 बाई एफ लैम्बडा 2 जेहेतु v इज इक्वल टू एफ लैम्बडा वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी गुणन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज during refraction. Frequency does not change during refraction. तेणु फ्रिक्वेंसी टा चेंज हेनी. तेणु v1 इज इक्वल टू f1 लैम्बडा 1 v2 इज इक्वल टू f2 लैम्बडा 2 किंतु f1 f2 हम ना कहीं फ्रिक्वेंसी एका रहिबो. तेणु f रहिला. तेणु f लैम्बडा 1 बाई f लैम्बडा 2. तेणु f f कटि गला. तेणु लैम्बडा 1 बाई लैम्बडा 2. तेणु आम लिख देले सो the refract index of medium 2 with respect to medium 1 the refract index of medium 2 with respect to medium 1 is defined as the ratio of wavelength of light in medium 1 to the wavelength of light in medium 2. That is μ21 is equal to lambda 1 by lambda 2. एटा गोटे क्वेश्चन दे दे. तेणु ये है डेफिनेशन 4. डेफिनेशन 5. डेफिनेशन 5 रो देख वी नो μ21 इज इक्वल टू v1 by v2. एटा को मु सजै के लिखि देनी c by v1 और c by v2 और c by v1. तेणु c c कटि गला. एटा ही जीवो v1 by c. एटा हला c by v2 हरण c by v1. तमने केते ही गला c by v2 गुणन v1 by c. तेणु c c कटि गला v1 by v2.
तेणु V1 बाई V2 टाक आम लिखिदे पारिबा C बाई V2 हरण C बाई V1। तेणु C बाई V2 तुम है μ2, C बाई V1 ये है μ1। तेणु आम लिखिदे पारे सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स so the refractive index of medium 2 with respect to medium 1 with respect to medium 1 is also defined as the ratio of refractive index of medium 2 refractive index of medium 2 with respect to the refractive index of medium 1। to the refractive index of medium 1, that is μ21 is equal to μ2 by μ1। प्रथमटा कहली μ21 है sin A by sin A, सेकेंड है μ21 by μ21 है V1 by V2, तापर है μ21 λ1 by λ2, μ21 μ2 by μ1 आउ खाली μ इज इक्वल टू C by V। तेणु ये डेफिनेशन 5। डेफिनेशन 6 टाक लेख कर धर यहाँ हूँ वाटर मीडियम, ये गोटे कॉइन अच्छी, यहाँ गोटे कॉइन लाइटा यू जाइकी एटी पड़ी एवं एटी लंब टाणले तेणु एटा गले यपटे जाता किंतु जेहेतु एटा गुरु मध्यम एटा है एयर मीडियम, गुरु मध्यम लघु मध्यम जाऊँगी तेणु लंब ठारू दूरे यपटे पलि एटा को पछुआ बढ़ेले पछुआ बढ़ाले। तेणु यहीटा है तुम इनसीडेंट रे, यहीटा है रिफ्रैक्टेड रे, यहीटा को पछुआ बढ़ेले बर्तमान से कॉइनटा यही रहा रकम जना पड़ो। तेणु यहाँ है आखि, आम चाहिए जो कॉइनटा एठी थिबो से कॉइनटा बर्तमान उपरुमा एति बाट उठी जाइछि बोली जना पड़ो। तेणु ना देदेनी ए बी सी डी। बर्तमान यहाँ है इनसीडेंट रे, यहाँ है नॉर्मल, नॉर्मल सहित इनसीडेंट रे जो गुण करे एंगल ऑफ इनसीडेंस। तेणु एटा समांतर, एटा तार छेदक,
अतएव 1 कोण इजिकल टू 1 कोण एकांतर कोण भली लक्ष्य कर जे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या कह जाए ना नॉर्मल सहित एटा है नॉर्मल ता सहित इंसिडेंट रे जो कोण करे एटा है इंसिडेंट रे तेणु यही कोणटा है एंगल ऑफ इंसिडेंस बर्तमान एटा समांतर एटा है तार छेदक ताने 1 कोण इजिकल टू 1 कोण एकांतर कोण बर्तमान नॉर्मल सहित रिफ्रैक्टेड रे जो कोण करे सेटा हूँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बर्तमान एटा स्ट्रेट बढ़ाई एटा समांतर एटा समांतर एटा तार छेदक 1 कोण इजिकल टू 1 कोण अनुरूप कोण आउ थे कौच जे एटा गोटे वाटर मीडियम ए बटम रे गोटे कॉइन रखी एवं से कॉइनटा को मुझे ऊपर चाहिला बेलू कौन हो ना या देहर लाइटा जाइकी एपटे रिफ्रैक्ट हो पड़े जाऊँगी एवं एटा को सीधा बढ़े देले ए नॉर्मल को जो बिंदु रे टच करिवो लागिवो ए कॉइनटा उठी जाइकी जेमती एई जगार अछि एई जगार अछि ता माने एक्चुअली कॉइनटा तले थिला तुमको लगे जमी कॉइनटा टे उपरुमा उठी आसी तेणु वर्तमान आम बाहर करके किस एंगल ऑफ इंसिडेंस कौटा ना इंसिडेंट रे सहित नॉर्मल जो कोण करे एंगल ऑफ इंसिडेंस तेणु ए दुईटा समांतर एटा तार छेदक 1 कोण इजिकल टू 1 कोण एकांतर कोण तेणु एटा आई माने एटा है आई पुणी एटा समांतर एटा तार छेदक 1 कोण इजिकल टू 1 कोण तेणु एटा हूँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तेणु एटा भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तेणु वर्तमान ए सी डी यही त्रिभुज को कंसीडर कर नाउ कंसीडरिंग द ट्रायंगल ए सी डी साइन आई इज इक्वल टू पी बाई एच आई सम्मुखीन बाहु है पी सी डी 90 डिग्री सम्मुखीन बाहु है एच एटा 90 डिग्री तेणु सम्मुखीन बाहु है एडी तेणु सी डी बाई एडी अगेन कंसीडरिंग द ट्रायंगल बी सी डी again considering that triangle BCD sin r है P by H P है CD by H 90 डिग्री है BD CD by BD so रिफ्रैक्ट इंडेक्स देख जिते सेपटू आसला मु लिखुली रिफ्रैक्ट इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 एपटू जिते जाऊँगी 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आई बाई साइन आर तेणु साइन आई है सी डी बाई ए डी डिवाइडेड बाई सी डी बाई बी डी तेणु इजिकल टू होगा सी डी कटिगला एटा बी डी बाई ए डी बी डी बाई ए डी सी एंड डी आर भेरी क्लोज टू इच अदर जिते सी आउ डी भेरी क्लोज हो तेणु ए डी इजिकल टू हो एसी ए डी इजिकल टू हो एसी आउ बी डी इजिकल टू हो बी सी when C and D are very close to each other. When C and D are very close
to each other. ଆଉ ଥରେ ଲେଖ କର। ସେ କହୁଛି ଏଟା ଆଇ, ତେଣୁ ଏଟା ସମାନ୍ତର, ଏଟା ତାର ଛେଦକ, ଏଟା ଆଇ ମାନେ ଏଟା ଆଇ। ସେମିତି ଏଟା ହେଉଛି ଆର୍, ଏଟା ସମାନ୍ତର, ଏଟା ତାର ଛେଦକ, ତେଣୁ ଏଟା ଆର୍ ମାନେ ଏଟା ହେଲା ଆର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସି ଡି ତ୍ରିଭୁଜର ସାଇନ୍ ଆଇ ବାହାର କର, ବି ସି ଡି ତ୍ରିଭୁଜର ସାଇନ୍ ଆର୍ ବାହାର କର। आमे सेपटू जिते नौले लिखुले रिफ्रैक्ट इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, एटा उल्टा एडू नौचे, तेणु लिखिदे 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 फर्मुला, किंतु आईटा ए पाखर नौचे, तेणु साइन आई बाई साइन आर, तेणु साइन आई साइन आर मूल्य पुट करदे। से कह जो सी डी बहुत क्लोज हो, तेणु एडी जहाँ एसी से आउ बीडी जहाँ बीसी से हो, तेणु लिखले बीसी बाई एसी, तेणु उल्टे देले और म्यू टू 1 इज इक्वल टू एटा उल्टे गला एसी बाई बीसी, और म्यू टू 1 इज इक्वल टू एसी बाई बीसी। तेणु एसी किस तार एक्चुअली डेप्थ थिला, तमने रियल डेप्थ एक्चुअली एतिकी तले थिला, जलर लेवलटा एतिकी, तेणु रियल डेप्थ ताकू जना पड़छ बर्तमान बीसी, तमने एपारेंट डेप्थ, रियल डेप्थ बाई एपारेंट डेप्थ। तेणु आम लिखिदे सो तमें यार रिफ्रैक्ट इंडेक्स जदि म्यू एटा 1 एटा 2 एटा मीडियम 2, तेणु रिफ्रैक्ट इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रियल डेप्थ टू द एपारेंट डेप्थ। तेणु आम लिखिदे यार डेफिनेशन the refract index of medium 2 एटा medium 2 with respect to medium 1 is also defined as the ratio of real depth to the apparent depth। The refract index of medium 2 with respect to medium 1 is defined as the ratio of real depth to the apparent depth. तेणु mu is equal to real depth divided by apparent depth। सिंपली mu लिखिपार कि 2 with respect to 1 भी लिखिपार, कि जाए से नहीं। तेणु तुम खाली म्यू भी लिखले चलो, म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाई एपारेंट डेप्थ। डेफिनेशन 7 आम कह यह जो क्रिटिकल एंगल, जो क्रिटिकल एंगल क्या कहते, व्हेन द लाइट रे when the light ray will move from
when the light ray will move from denser medium to rarer medium, when the light ray will move from denser medium to rarer medium, then for a particular angle of incidence the angle of refraction is 90 degree. The angle of refraction is 90 degree. That particular angle of incidence is known as critical angle. If angle of incidence will be greater than the critical angle, if the angle of incidence will be greater than the critical angle, then instead of refraction, reflection will take place. This is known as total internal reflection. This is known as total internal reflection. बर्तमान लक्ष्य कर से कुछ क्रिटिकल एंगल क्या कहती व्हेन द लाइट रे विल मूव फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जदि गोटे गुरु माध्यम लघु माध्यम को लाइटा जाउथबो देन तेबे फॉर ए पार्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री सही एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहा जाए क्रिटिकल एंगल आउ जदि एंगल ऑफ इंसिडेंसटा तार क्रिटिकल एंगल ठारू अधिका हो जाए तेबे आउ रिफ्रैक्शन होबो नहीं रिफ्लेक्शन हो जिवो कारण लाइटटा जो मीडियम रु जाउथिबो सेही मीडियम को फेरी आसीबो ताकू ही कहा जाए संपूर्ण प्रतिफलन बा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तेणु एटा को नेक्स्ट क्लास रो बुझेइमी एटा खाली डेफिनेशन लक्ष्य कर जे लाइट रे एटा गोटे डेंसर मीडियम रु रेयर मीडियम को जीवो गोटे पार्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पाई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन टा 90 डिग्री होबो सही एंगल ऑफ इंसिडेंस टा को क्रिटिकल एंगल कहती आउ जदि एंगल ऑफ इंसिडेंस टा क्रिटिकल एंगल रु अधिका हो जिवो तेबे आउ रिफ्रैक्शन होबो नहीं रिफ्लेक्शन हो जिवो एवं से रिफ्लेक्शन टा को ऑर्डिनरी रिफ्लेक्शन न कही कहा जाए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तेणु एठी रहिला नेक्स्ट क्लास को सेटा बुझेबा आउ